अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर एंड डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द untreated water. Treatment of water can be done by any of the following method. पहला है स्क्रीनिंग, फिर एरेशन, फिर कोगुलेशन फ्लॉकुलेशन, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग, डिसैलिनेशन, फ्लोराइडेशन, डीफ्लोराइडेशन, डीफ्लोराइडेशन, ये सब भी होता है। सब सरफेस वाटर में नो टेस्ट एंड ऑर्डर टेक प्लेस। स्क्रीनिंग अगर ट्रिब्यूटी लेस देन 10 NTU होगा। एरेशन सब सरफेस वाटर में होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन डिफिशिएंट होता है। ओनली डिसइंफेक्शन रिक्वायर्ड होता है सब सरफेस वाटर के अगर ट्रिब्यूटी लेस देन 10 NTU है। Now disinfection is the last treatment. So it is स्क्रीनिंग, फिर एरेशन होता है सब सरफेस वाटर में, फिर सॉफ्टनिंग, फिर सेडिमेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिसइंफेक्शन। ये प्रोसीजर होता है सब सरफेस वाटर का। अब एक एक करके देखते हैं। स्क्रीनिंग इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कैरी आउट द रिमूवल ऑफ हैवी सस्पेंडेड सॉलिड्स लाइक प्लांट्स, ट्रीज, animals, stones from the water. Screening is generally adopted for treatment of subsurface water. Screening is done with the help of units referred as screens. That are generally of two types. पहला है कोर्स स्क्रीन, बार स्क्रीन, थ्रेश, ट्रैक और फाइन स्क्रीन। कोर्स स्क्रीन कैसी होती है? These are in the form of bars of size 10 to 55 20. These screens are always placed at an inclination of 3 to 6 vertical is to 1 horizontal, as it helps in effective cleaning of the screen by raking mechanism. Moreover, it also helps in increasing the efficiency of screening process. Trash means impurities is removed by रैक, ट्रैश रैक होती है। ये डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, समझ लो। नाउ द लॉस ऑफ हेड इन वाटर टू स्क्रीन इज HL इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2G इंटू K। ये है फॉर्मूला। K अपॉन 2G जनरली होता है 0.0729, K को इक्वल टू होता है 1.5 के। सो HL का फॉर्मूला ये आगे देख लो, समझ लो। HL गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू क्लॉगिंग, ठीक है। U क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। V क्या है? वेलोसिटी थ्रू स्क्रीन। नाउ फाइन स्क्रीन आर इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश ऑफ साइज 10 mm. अंडर नॉर्मल treatment conditions, fine screen are generally avoided as they get frequently clogged, requiring their frequent cleaning, which in turn increases their operational cost. Hence, it is generally recommended to use coarse screen instead of fine screen and to remove the fine suspended particles in following sedimentation and filtration process. Diagram दिया हुआ है। Friction is more due to increase in surface area, means more choking. Now phenol क्या होता है? A toxic white acid derivative of benzene used as disinfectant and for antiseptic. Acid produced by biodegradable of dead organic matter, यही फिनॉल है। Now aeration is the process in which water is brought in
intimate contact with air so as to carry out removal of following impurities. It is done for the removal of hydrogen sulfide and carbon dioxide from water. It is done for the removal of volatile liquid like phenol and humic acid from water. It is done for the removal of dissolved organic matter from the water. It is done for the removal of dissolved minerals like आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम वाटर. ये केमिकल रिएक्शन दी है, कैसे रिमूव करते हैं एरेशन से. द अबव प्रोसेस आल्सो टेंड टू इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ वाटर एज pH decreases. Aeration is generally done for the treatment of groundwater because it is not contacting with oxygen. Aeration can be done by any one of the following method. प्रिंसिपल क्या है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ वाटर, मोर ऑक्सीजन विल बी अब्सॉर्ब्ड. पहला है स्प्रे नोजल मेथड. रिक्वायरमेंट ऑफ पावर इज हाई होती है इसमें. कार्बन डाइऑक्साइड 90% मूव हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड 99%. नेक्स्ट है कास्केड एरेटर, लीस्ट एफिशिएंट होता है, नो मेंटेनेंस यूज्ड ऑन लार्ज स्केल, मोस्टली यूज्ड होता है. देखो कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 45% रिमूव होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड 35%. नेक्स्ट है ट्रे टावर, इट इज़ मोस्ट एफिशिएंट यूज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. डायग्राम दिया हुआ है, देख लो. नाउ नेक्स्ट है डिफ्यूज्ड एयर मेथड, ये डायग्राम दिया हुआ है. नाउ सेडिमेंटेशन, it is the process of removal of suspended solid from the water. The entire theory of sedimentation is dependent on single parameter termed as specific gravity. Specific gravity क्या होती है? weight of solid of given volume upon weight of water of same volume. Water is in flowing condition, so due to turbulence, no settling takes place. In sedimentation, all the pressures which opposes the tendency of solvent are taken proper care of. Velocity of flow, turbulence is decreases, tension increases. Viscosity decreases, efficiency increases. Size of particle. ये साइज ऑफ पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, देख लो, समझ लो कैसे क्या हुआ है. बिगर द साइज ऑफ पार्टिकल विल सेटल क्विकली. ठीक है, समझ लेना ये कैसे क्या निकला है. नाउ viscosity and size of particle can be altered during operation. Size of a particle is normally altered. Alteration in viscosity needs extra cost. Sedimentation is carried out in the units termed as sedimentation tank, which are of two types: quiescent type, fixed type, fill and draw type. Continuous flow type horizontal flow type होता है और vertical flow type होता है. Now quiescent type sedimentation tank. These are the type of tank in which the flow of water is completely stopped for 24 hours, during which solid present in it hence gets settled in the tank, resulting in the formation of sludge, which is further followed by the removal of settled water from the tank for the next treatment. Retention time for this tank are 24 hours. Cleaning period is 6 to 12 hours. These tanks are designed for the treatment of maximum daily demand. ये होता है. ये सेटलिंग जोन दिया हुआ है, स्लज जोन है, मैनुअल कूलिंग कैसे क्या होता है, डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, समझ लो.
ये दिया हुआ है डिजाइन डिस्चार्ज कितना क्या 1.8 टाइम्स ऑफ होता है एवरेज डेली डिमांड, समझ लो इसको। नाउ मिनिमम यूनिट इज डिपेंड अपॉन डिटेंशन टाइम, सो मिनिमम यूनिट शुड बी 3, 2 फॉर ऑपरेशन एंड 1 फॉर स्टैंड बाई। मैक्सिमम यूनिट डिपेंड अपॉन डेली डिमांड। नाउ continuous flow type sedimentation tank. These are the type of tank in which flow of water is to be maintained to be continuous either in vertical or in horizontal plane so as to carry out the settlement of solid in it. Horizontal flow type sedimentation tank assumptions in the analysis of horizontal flow type sedimentation tank. पहला है a particle is assumed to be settled in the tank if it reaches the bottom of the settling zone. दूसरा है concentration of the particles of all the size is same at all the point of the vertical section at the inlet end. डायग्राम दिया हुआ है, देख लो समझ लो। ना डिफरेंट फॉर्मूले निकाले हुए हैं सेटलिंग टाइम के, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, डिटेंशन टाइम एक्सेट्रा। एक चीज़ नोट करो, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न साइज ऑफ पार्टिकल इज आल्सो डिटरमाइंड एज सरफेस ओवरफ्लो रेट एज इट डिसाइड द एफिशिएंसी ऑफ द टैंक। ये सब दिया हुआ है, समझो इसको। 100% removal of concerned size of particle take place in the tank. If particle of greater size than concerned size of particle, it will settle quickly than concerned size of particle. ये सब दिया हुआ है, देख लो समझ लो। Particle of size greater than concerned size of particle are also 100% removed in the tank. पार्टिकल ऑफ स्मॉलर साइज के लिए दिया हुआ, देख लो क्या है। स्मॉलर साइज पार्टिकल विल बी पार्शियल रिमूव्ड। Particle of size smaller than concerned size of particle are partially removed in the tank. All these particles present in the tank from 0 to h are removed in the tank, and all these particles present in the tank from h to h are not removed, taken out of the tank along with settled water coming out of the tank. परसेंटेज रिमूवल ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल देखो दिया हुआ है। यूएस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर साइज पार्टिकल। वीएस क्या है, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न साइज पार्टिकल। परसेंटेज रिमूवल कैसे क्या है देख लो समझ लो। ये निकाला हुआ है परसेंटेज रिमूवल। ना क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द गिवन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन find the overall efficiency of sedimentation tank if surface overflow rate is 0.35 mm per second and concentration of suspended solid in water is 1000 milligram per liter। ये दिया हुआ डिफरेंट पार्टिकल साइज के लिए सेटलिंग वेलोसिटी दी हुई है ना। ये सॉल्यूशन है, देख लो समझ लो। ये उससे ग्राफ आया है, ये भी देख लो समझ लो। Now next question है, determine the overall removal obtained from a sedimentation tank having following data। overflow rate दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, डायनेमिक विस्कोसिटी दी है, रो ऑफ वाटर दिया है। नॉन डिफरेंट पार्टिकल साइज के लिए वेट ऑफ फ्रैक्शन ग्रेटर इन साइज दिया हुआ है। डिजाइन डेटा और कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। पहला है ओवरफ्लो रेट। डिजाइन डेटा फॉर कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक।
पहला है ओवरफ्लो रेट. ओवरफ्लो रेट इज इन द रेंज ऑफ 12,000 to 18,000 liter per meter square per day for plain sedimentation and 24,000 to 30,000 liter per meter square per day for coagulation added sedimentation. Liter per meter square per day is the discharge per unit area. ठीक है. सरफेस एरिया इक्वल टू QD अपॉन ओवरफ्लो रेट. सेकेंड है डिटेंशन टाइम. डिटेंशन टाइम is in the range of 4 to 8 hours for plain sedimentation and 2 to 4 hours for coagulation added sedimentation. Detention time 4 to 8 hours और 2 to 4 for coagulation का. वॉल्यूम QD इंटू TD. डेप्थ ऐसा निकालते हैं. हॉरिजॉन्टल फ्लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज इन द रेंज ऑफ 0.15 to 0.9 meter per minute, normally taken to be 0.3 meter per minute. लेंथ इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे. लेंथ टू विड्थ रेशियो इज adapted to be 4 and width is maintained in the range of 10 to 12 meter. These tanks are designed for treatment of maximum daily demand, which is 1.8 times the average daily demand. If cleaning of tank is done manually, then additional volume of tank is provided at the bottom of the tank for accumulation of sludge. Depth which is kept in the range of 0.8 to 1.2 meter. Vertical flow type sedimentation tank. डायग्राम दिया हुआ है, देख लो, समझ लो. In vertical flow type tank, settling velocity of particle remain constant during settlement, but horizontal velocity of flow reduces as the particle move from center towards the circumference due to increase in area 2 pi rh. Hence, the path followed by particle during settlement in the tank is a parabolic path, unlike straight line path in horizontal flow type tank. वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है, सरफेस एरिया, ये सब दिया हुआ है. यहाँ क्वेश्चन देखते हैं. डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ सेटलिंग टैंक फॉर 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड फॉर डिस्चार्ज डिजाइन फ्लो यूजिंग डिजाइन ओवरफ्लो रेट इज 32.5 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे. ऑल्सो फाइंड द डेप्थ ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक if detention time is 95 minutes. Assume length to width ratio is in the range of 2:1 to 5:1 and length of the tank should not exceed 100 meter. ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लो, समझ लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन a continuous flow settling tank 3.5 meter deep and 65 meter long, flow velocity of water is observed as 1.22 centimeter per second. What effective size of particle of specific gravity 2.65 may be effectively removed in this tank if kinematic viscosity of water is 0.01 centimeter square per second. ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लो, समझ लो. नेक्स्ट है coagulation added sedimentation. Efficiency of sedimentation is comparatively less if water consists of fine suspended particle. Hence, in order to increase its efficiency, coagulation added sedimentation is being adopted. Coagulation added sedimentation is adopted in 3 stages. First है coagulation, second है flocculation, third है sedimentation. Now, coagulation. It is the process in which certain chemicals termed as coagulant are mixed in water in order to neutralize the negative protective charge present over the impurities so as to increase their opportunity to come in contact with each other by van der Waals force, thus grow in size and gets easily settled in following sedimentation process. In order to neutralize the charge over the suspended impurities,
A minimum energy termed as threshold energy is required, which is provided by inducing fast mixing and coagulation. डायग्राम दिया हुआ है. न्यूट्रलाइजेशन नीड्स एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी. डिफरेंट टाइप ऑफ coagulant which may be used for treatment of water are, पहला है एलम, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट. एलम रिएक्ट विद alkalinity present in water and result in formation of sticky gelatinous precipitate of aluminum hydroxide which attract fine suspended impurities over its surface, thus grow in size and gets easily settled in following sedimentation process. ये देखो दिया हुआ है, स्टिकी जिलेटिनियस फॉर्म हो जाता है चार न्यूट्रलाइजेशन की वजह से, सिर्फ कोगुलेशन हो जाता है जिलेटिनियस की वजह से. If alkalinity is not present in water naturally, it is induced artificially by the addition of lime or soda ash in the water. देखो alkalinity इंड्यूस की गई तो ये फॉर्म इक्वेशन बनती है, दी हुई है, समझ लो. The above process also tend to increase the hardness and acidity of water. The dose of alum depends upon the turbidity and color of water, which is determined by performing jar test. ये जार टेस्ट दिया हुआ है, इसके आंसर निकालते हैं. As the turbidity decreases, efficiency increases. ऑप्टिमम डोज निकाल लेते हैं, ग्राफ दिया हुआ देख लो. Normal dose of alum is in the range of 10 to 30 milligram per liter. Alum also removes taste, color and odor from the water. Alum work in the pH range of 6.5 to 8.5. Reaction take place within this. Addition of alum in water result in the formation of large amount of sludge, quantity of which can be computed as follows. ये दिया हुआ कैसे निकालते हैं, इक्वेशन दी है. आगे कैसे इक्वेशन सब एलम क्वांटिटी निकालने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, 1 ग्राम के लिए दिया हुआ है. नाउ कॉपराश FeSO4.7H2 मतलब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट. इट आल्सो रिएक्ट विद alkalinity present in water and result in the formation of sticky gelatinous precipitate of hydrated ferrous sulfate which attract fine sulfated suspended impurities over its surface and gets easily settled in following sedimentation process. ये इक्वेशन दी हुई है. फेरिक हाइड्रोक्साइड बना लेता है, स्टिकी होता है. कॉपरास एक्ट एज एन इफेक्टिव कोगुलेंट when used in coagulation with lime. Copros working pH range is high. It is not used for treatment of colored water because it itself induces color in water. Its dosage is same as that of alum, 10 to 30 milligram per liter, but it is cheaper than alum. It works in the pH range of 8.5 and above. Hence, used in conjunction with lime. Next है chlorinated copras. Chlorinated copras is formed by the addition of chlorine in copras. क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ये इक्वेशन दी हुई है कैसे क्या होता है, पीएच रेंज भी दिया हुआ है. When ferric chloride used independently as a coagulant, it works in the pH range of 3.5 to 6.5 and above 8.5. And when ferric sulfate is used independently as a coagulant, it works in the range of 4 to 7 and above 9. Now, sodium aluminate Na2Al2O4. Sodium aluminate react with calcium or magnesium present in water and result in the formation of sticky gelatinous precipitate of calcium or magnesium aluminate, which attracts fine suspended impurities over its surface, thus grow in size
and gets easily settled in following sedimentation process. ये इक्वेशन दी हुई है कैसे होता है. It removes hardness of water. It does not require any alkalinity in water. Moreover, it removes hardness from water, unlike other coagulant, which adds hardness in water. It is generally used for treatment of boiler feed water, क्योंकि जीरो हार्डनेस रिक्वायर होती है. It is comparatively costlier than alum. Cheapest coagulant is copras and costliest is sodium aluminate. It work in the pH range of 6 to 8.5. एक चीज नोट करो, iron flocks are heavier than aluminum flock. Iron flocks are formed earlier than aluminum flock. Iron salt work in wide pH range. Iron salts are cheaper than aluminum salt. Alum is generally used for the treatment of water supplies and iron salt are generally used for the treatment of sewage. ये बात. Pitting मतलब corrosion, tuberculation मतलब incrustation. Strict supervision is required for the handling of iron salt as their quality gets deteriorated over a period of time with storage. Iron salt promote the growth of iron bacteria which lead to pitting and tuberculation in pipe, which lead to decreased discharge carrying capacity. now क्वेश्चन देखते हैं. A coagulation treatment plant with the flow of 0.5 meter cube per second is dosing alum at 23 milligram per liter. No other chemical being added. The raw water suspended solid concentration is 37 milligram per liter. Effluent solid concentration is 12 milligram per liter. Solid content of the sludge is 1%. Specific gravity of the sludge solid is 3.01. What volume of sludge must be disposed per day from this plant? ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देख लो, समझ लो कैसे क्या है. सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a coagulation sedimentation plant clarify 40 mld of water. The quantity of filter alum required at the plant is 18 milligram per liter. If the raw water having alkalinity equivalent to 5 milligram per liter as CaCO3, determine the quantity of filter alum and quicklime, which is 85% pure, required per year by the plant. सॉल्यूशन दिया हुआ है, कैसे क्या है देख लो. No. In order to neutralize the charge over the suspended impurities, threshold energy is provided by inducing the fast mixing, which can be achieved by any of the following unit. Mixing basin क्या है? Over and under type और around and end type. Mechanical mixers कैसे होते हैं? Horizontal shaft type और vertical shaft type. Now mixing basin. In mixing basin, mixing is induced by generating the turbulence which is achieved by bringing the rapid change in the direction of the flow of water. बैफल वाल्व की मदद से दिया हुआ डायग्राम. मैकेनिकल मिक्सर कैसे होता है, देखो डायग्राम दिया हुआ है. In mechanical mixtures, mixing is induced mechanically by vigorous agitation of the coagulant in the raw water, intensity of which depends upon the parameter referred as temporal mean velocity gradient, which signifies the relative velocity between the neutralized particle located at a particular distance from each other. यह है velocity gradient.
इलास्टिक ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है, रूट ओवर पी अपॉन म्यू वी। और टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट is kept to be greater than 300 per second during coagulation. Detention time in this tank is in the range of 30 to 60 seconds. Deep circular or square tank having depth to width ratio is in the range of 1:1 or 3:1. Power supply to the shaft is 1 to 3 watt per unit discharge. Speed of the shaft should be such that velocity generated at the top tip of the pedal should be greater than 3 meter per second. डायग्राम दिया हुआ है। Now flocculation. Flocculation is the process in which neutralized particles are brought in intimate contact with each other so as to promote their agglomeration, means to combine, resulting in increased size. Flocks which can easily removed in the following sedimentation process. In order to increase the opportunity of these neutralized particles to come in contact with each other, slow mixing is induced in flocculation. Slow mixing का डायग्राम है। Rate of flocculation depend upon the following parameters. As turbidity increases, rate increases. Type and dose of coagulant पे डिपेंड करता है। ऑप्टिमम होता है फॉर एल्यूमिनियम और आयरन के लिए। इंटेंसिटी ऑफ मिक्सिंग पे भी डिपेंड करता है। ऑप्टिमम इंटेंसिटी ग्रेडियंट होना चाहिए 10 to 75 per second ऑप्टिमम है। In flocculation, a parameter G into TD represents the coagulation opportunity, as it signifies the number of collision between the neutralized particle and hence decide the type of flock formed. As velocity gradient increases, TD decreases detention time. As G decreases, TD increases. पहले वाले स्मॉल एंड डेंस फ्लॉक बनते हैं, दूसरे वाले में लार्ज एंड लाइट फ्लॉक बनते हैं। As G inform about the relative velocity, hence when n increases, G increases. n increases then G decreases. n डिक्रीज करेगा तो G इंक्रीज करेगा, n इंक्रीज करेगा G डिक्रीज करेगा। ये डायग्राम दिया हुआ है कैसे क्या है। पावर सप्लाई रिड्यूस करेंगे, velocity of large light is less as that of small dense, so it settle over large light and become large dense. अच्छा, since large dense flock gets easily settled in sedimentation tank, it is advantageous to vary the value of G velocity gradient along the sedimentation tank. A small dense flock formed in the initial section of the tank. As G increases, T decreases. Mixing time of the T combined with large light flock formed in subsequent section of the tank. As G decreases, T increases. Mixing time increases and result in the formation of large dense flock. अच्छा, depth of this tank is in the range of 3 to 3.5 meter per second. Detention time is 10 to 30 minutes. Temporal mean velocity gradient is 10 to 75 per second. Temporal mean velocity gradient at the inlet is twice the temporal mean velocity gradient at the outlet. Yeah. Total area of pedal is 10 to 25% of the tank area. GTD is 20 to 60,000 for alum and 1 to 1.5 lakh for iron salt. Calculation of टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसे निकाला ये दिया है, देख लो कैसे क्या है। क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लॉकुलेशन चैम्बर इज 30 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड, 4.5 मीटर डीप, is to treat 75 mld of water. It is equipped with 12 meter long and 0.3 meter wide pedals supported parallel to each other and moved by 4 horizontal shafts which rotate at a speed of 2.5 rpm.
The center line of paddle is 1.8 meter from the center line of the shaft, which is situated at the mid depth of the tank. Two paddles are mounted on each shaft, one opposite to each other. If the mean velocity of the water is 1/4 the velocity of paddle and kinematic viscosity is 1.31 into 10⁻⁶ meter square per second, compute power consumption, time of flocculation, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, देखो समझो। नॉट क्वेरी फ्लॉकुलेटर क्या ये है दिया हुआ है। इफ ऑल these three processes, coagulation, flocculation or sedimentation, are carried out in a single tank, then it is called query flocculator। ये होता है।